Good evening, students. Am I audible? Good evening. Am I audible? Good evening, sir. Yes, sir. Yeah. Yesterday we had started with third unit, right? So it was regarding to your supply. So in which we had seen what is meant by supply, place of supply, supply of services, supply of goods. Then which activity doesn't comes under supply. That also, then time of supply, how to calculate the time of supply, that is also important. On the basis of this, you have to file the returns. Getting this, that we had seen in the last lecture. Then place of supply, on the basis why it is required to know the place of supply, because you are liable to pay this SGST and CGST to respective state. So place of supply is very much important, and basically GST is one tax for one nation or one tax for entire nation. So there are no various types of taxes which will be collected from the government. So GST is the only single tax for single nation. That's why some proportion goes towards the central government and some proportion goes towards the state government. Getting this? So we should know the place of supply, because the respective state in which receiver is there or recipient of supply is there, that respective state is going to get the benefit of SGST. Getting this? So CGST goes directly to the central government, लेकिन SGST किसके पास जाएगा? So SGST goes to the such a state in which recipient is staying. Getting this? To understand this, we need to know the place of supply of services and place of supply of goods. Okay. Now, after that, let us go for the to know the value of supply of goods and services. How we can calculate the value, because on the basis of final value of that goods and services, GST will be applicable. Getting this? So what if, for example, if I purchase some goods, from DMart, at that time the goods have certain value. Getting this? So I need to pay this value, and with respect to this value tax will be applicable to. अगर मैं 200 का प्रोडक्ट लेता तो 200 के हिसाब से मुझे टैक्स लगेगा. अगर 100 का प्रोडक्ट लेता है तो 100 का जो कुछ प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन से जो कुछ टैक्स लगेगा, that will be I would have to pay. Means what? Tax is liable only when value of supply is determined. Without value of supply, without value of that goods and services, I can't charge the GST. So that to charge the GST, to decide my tax liability, to find out my tax liability on supply of goods and services. Getting this? So we must know the value, final value of that supply of goods or services. Getting this? So final value means it is nothing but it is a transactional values. Okay. The amount collected by the supplier from the buyer is called as a value of supply. The amount collected by the seller from the buyer. तो बायर से हम लोग
जब माल इंटरचेंज माल जब हैंडओवर करते समय जितना अमाउंट हम लोग चार्ज करेंगे, that will be called as the value of that supply. With respect to this value of supply, we will add the tax. Getting this? So we need to know the final value of that supply, and this final value of that supply of goods and services, which will be reflected into your invoice, which will reflect into your bill. Getting this? So this will be your final value. If parties are related, then reasonable value may not be charged. If parties are related, yani if I am sending my goods and services to one of my relative, I'm sending goods and services to one of my relative which is staying in Nagpur. At that time, the rate in which I'm selling my goods in the market, the same rate I will not apply. Getting this? So I will sell to the product to my relative who is staying in Nagpur at minimum rate. At that time, this will be not considered as the final value of the supply. Getting this? So at that time, actual value of the supply at which you will be selling outside market, same value of supply will be chargeable from your relatives. Try to understand this. So if parties are related, then reasonable value may not be charged. हम लोग कम या ज्यादा लेंगे या कम लेंगे. But the transaction may takes place as a barter or exchange. इस transaction में भी barter यानी उसका product मैं ले लूंगा और मेरा product in replacement उसको दे दूंगा. It may also happen. Okay. The GST laws prescribe that. In that case, how we are going to resolve this situation? The GST law prescribe that value on which GST is charged must be transactional value. जो वैल्यू के ऊपर हम लोग जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, दैट विल बी रियल वैल्यू और ट्रांजैक्शनल वैल्यू. मींस व्हाट? दिस विल बी यूनिवर्सल वैल्यू to whom to any of your supplier, whatever you are charging the rate, the same rate you have to use at the time of same value you have to use at the time of barter as well as exchange. बार्टर करते समय, एक्सचेंज करते समय उसकी वैल्यू, प्रोडक्ट या गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू ट्रांजैक्शनल वैल्यू से नीचे नहीं होना चाहिए. यानी जिस प्रोडक्ट का इनवॉइस मैंने प्रीवियस सप्लायर, प्रीवियस कस्टमर को दिया रहेगा, जिस रेट से दिया रहेगा, उसी रेट से मुझे मेरे रिलेटिव्स को भी देना पड़ेगा. वही बिल बनाते समय, इनवॉइस बनाते समय वही रेट मुझे दिखाना पड़ेगा. That rate is called as a transactional value. This is the value at which unrelated parties would transact. Unrelated party जो एक दूसरे के relatives नहीं है, दोनों का एक दूसरे के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे पार्टीज would transact, वो जो व्यवहार करते हैं in the normal course of business, रेगुलर बिजनेस में जिस रेट को व्यवहार होता है वही रेट will be considered as a value of your supply of goods or services. Getting this? And this value of goods and value of goods and services is nothing but transactional value. Okay. Now, first let us see valuation of supply under GST. अभी supply का valuation कैसे करते हैं? So, along with your supply, there may be some of the taxes which will be also available. Means apart from your GST, there will be some of the other taxes. Again, it depends upon. Nature of your product, whether it comes under GST or whether it doesn't comes under GST. Okay, the value of supply under GST shall include. तो value of supply में क्या क्या आता है, वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, सप्लाई की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? Any taxes, duties, cess, fees and charges levied under any act. GST छोड़ के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रहेंगे कि उसके ऊपर टैक्सेस भरने पड़ेंगे, ड्यूटीज भरनी पड़ेंगी, सरचार्ज भरने पड़ेंगे, फीस देनी पड़ेंगी, चार्जेस देनी पड़ेंगे. अगर कोई दूसरा जीएसटी छोड़ के अगर कोई दूसरे एक्ट के हिसाब से अगर मुझे उसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर ऐसी फीस, चार्जेस, सेस भरना पड़ेगा, at that time these values, these taxes, these duties, these sales, fees or charges will be added into the final value. Getting this? Then any kind of incidental expenses in relation to the sale, for example packing, or for example any kind of commission,
any kind of installation expenses, so such kind of installation expenses will be also added in the final value of goods or services. After that, if you are getting any kind of supply subsidies except government supply, गवर्नमेंट सब्सिडी, गवर्नमेंट छोड़ सप्लाई सब्सिडी छोड़ के अगर आपको कुछ सब्सिडी मिलती है, दिस सब्सिडी विल बी अ पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ योर सप्लाई, वो भी सप्लाई की वैल्यू निकालते समय ऐड करना है. देन इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन विल बी आल्सो इंक्लूडेड. इंटरेस्ट, पेनल्टीज, फीस, ये भी सप्लाई के उसी प्रोडक्ट के वैल्यू में ऐड हो जाएगा. And all this value we will be recovering from your recipient. Discount given before or at the time of supply will be also allowed as a deduction. जो कुछ discount हम लोग दे देंगे उसका deduction मिलेगा from transaction value. So we have to, by adding various types of taxes, duties, fees, we will decide. Then installation expenses, by making the addition of all these things, we will calculate the transactional value of that product or transaction value of that services, on which tax will be, GST will be applicable. GST लगने के पहले कुछ अगर कुछ टैक्सेस है, पेनल्टी है, रेट्स है, चार्जेस है, पैकिंग है, कमीशन के चार्जेस है, इंस्टॉलेशन के चार्जेस है, तो वो भी उसमें ऐड हो जाएंगे. और देन वी विल फाइंड आउट द ट्रांजेक्शनल वैल्यू. और जो ट्रांजेक्शनल वैल्यू जो बोलते हैं वो ट्रांजेक्शनल वैल्यू यानी क्या है, ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर 18% टैक्स लगेगा, 12% टैक्स लगेगा. So before calculation of this GST, first we have to add other kind of charges in the actual value of these goods and services. So this is how we can do the valuation of supply under GST. Okay. Now next one is the important point क्या है. See, supply of goods and services or both is the taxable event. कोई भी तरीके का सप्लाई हम लोग अगर करते हैं तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ टैक्सेबल इवेंट. ओके, टैक्स रेट में भी 0%, बट इट विल बी अ टैक्सेबल इवेंट. सप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो जीएसटी इज चार्जेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. It is not manufacturing based tax. It is not manufacturing based tax. It is the supply based tax. That's why whenever this supply occurs, whenever there is the incidence of supply, at that time this transaction will be called as a taxable event. Okay. Now supply of goods and services for consideration is always taxable. Supply of goods and services consideration यानी for exchange of money और फॉर एक्सचेंज ऑफ बार्टर सिस्टम. मैं मेरा प्रोडक्ट दे दूंगा, उससे उसका प्रोडक्ट ले लूंगा. मैं मेरा प्रोडक्ट दे दूंगा एंड रिप्लेसमेंट में वो क्या करेगा, मुझे पैसा दे देगा. दैट इज समथिंग अबाउट कंसिडरेशन. अगर कोई भी गुड्स का सप्लाई होते समय अगर कुछ कंसिडरेशन मिलता है, कुछ अमाउंट कंसिडर की जाएगी, कुछ थिंग्स एक्सचेंज की जाएंगे, एट दैट टाइम सच टाइप ऑफ सप्लाई विल कॉल्ड एज अ टैक्सेबल सप्लाई. Okay, supply by taxable person is related person is subject to GST. Supply by taxable person यानी taxable person ने उसका GST का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है. अगर उसी रजिस्टर्ड सप्लायर ने कोई भी माल सप्लाई किया तो ये GST के अंडर ही आता है. Even if there is no consideration, that is no amount charged and will be also cover the following. अगर टैक्सेबल सप्लायर ने कोई भी माल अगर सप्लाई करता है तो ये टैक्सेबल इवेंट होता है. दो ही इज नॉट चार्जिंग जीएसटी, दो ही इज नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन ऑन दिस सप्लाई, बट इनकम, सो जीएसटी एक्ट विल कंसीडर इट एज अ टैक्सेबल इवेंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो उसमें क्या क्या नहीं आता है, दैट इज फ्री गिफ्ट रिलेट टू रिलेटेड पर्सन. अगर फ्री गिफ्ट अगर हम लोग देते हैं तो will be subject to GST. Then benefit provided to an employee by the employer like transport, meals, telephones. However, gift up to 50K यानी 50,000 to the employee will not be subject to the GST. तो कोई भी बेनिफिट्स अगर ट्रांसपोर्ट के, मील के, टेलीफोन के अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयर्स को, एम्प्लॉई को, तो दैट विल बी अगेन कंसिडर्ड अंडर GST.
Okay, then supply by the principal to the agent. Supply by principal to the agent. मेन आपका मैन्युफैक्चरर कुछ सब एडिशनल सप्लायर को या उसको क्या बोलते हैं, यानी फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू समबडी एल्स एंड ही इज आल्सो मैन्युफैक्चरिंग एज पर माय स्पेसिफिकेशन। मुझे सप्लाई करने के बिना वो किसी को भी माल नहीं देता है, उसका एग्जिस्टेंस यानी सिर्फ मेरे लिए रहेगा, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट। So that there will be the sum of the agent if the supply by the main manufacturer is sending towards subject to the agent, at that time it also comes under GST. So these are the important points, and along with this there are some another important points. So first let us understand पहला क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो दोनों भी टैक्सेबल इवेंट है। दूसरा चीज क्या है, अगर हम लोग सप्लाई करते हैं एंड दैट टाइम अगर हम लोग कुछ कंसीडरेशन लेते हैं, कुछ मुबदला लेते हैं, दिस विल बी ऑलवेज टैक्सेबल। गेटिंग दिस। तीसरा चीज क्या है, सप्लाई बाय टैक्सेबल पर्सन टू रिलेटेड पर्सन इज सब्जेक्ट टू जीएसटी इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन। यानी जो रजिस्टर्ड सप्लायर है उसने किसी को भी माल दिया, अगर मुफ्त में भी दिया तभी भी वो टैक्सेबल इवेंट हो जाएगा, बिकॉज दिस पर्सन हैज रजिस्टर्ड एज अ सप्लायर। ओके, उसके बाद फ्री गिफ्ट अगर हो हम लोग देते हैं टू द रिलेटेड पर्सन विल बी आल्सो सब्जेक्ट टू जीएसटी। फ्री गिफ्ट विल बी आल्सो टू द रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन मींस व्हाट, यू हैव इंटरेस्ट बिटवीन दिस। उसके पहले आपका और उसके बीच में कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं, जिसको हम लोग बाद में फ्री गिफ्ट नहीं दे सकते हैं। To hide the tax, certain manufacturer can do these things. Getting this? So if you are registered person, if you are registered supplier, and once you are registered supplier, and if you send the goods free of cost without consideration to your recipient, that time it will also comes under the GST. Then benefits, employer ने एम्प्लॉय को दिए हुए सारे बेनिफिट जीएसटी के अंडर आते हैं, और प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया हुआ माल वो भी जीएसटी के अंडर आता है। ओके, नाउ लुक टुवर्ड्स 7 पॉइंट क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया के बाहर से अगर कुछ हम लोग माल परचेस करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एट दैट टाइम जीएसटी इज आल्सो एप्लीकेबल दो देयर इज नो कंसीडरेशन। अगर हम लोग बिना मुबदला का कोई हम लोग इंपोर्ट करते हैं और उसी इंपोर्ट के ऊपर अगर हम लोग चार्ज नहीं देते हैं, दैट टाइम आल्सो जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन सर्टेन इंपोर्ट्स, ऑन दिस इंपोर्ट्स। तो कोई भी इंपोर्ट फ्री ऑफ जीएसटी नहीं रहेगा, दो देयर इज नो कंसीडरेशन। मुबदला अगर मैंने नहीं भी दिया तभी भी उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। दिस इज द केस फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। नाउ branch or head office in India receiving free service from head office outside India. For example, branch office in India is receiving free services from head office from outside India. इंडिया में मेरा ब्रांच है और हेड ऑफिस फॉर एग्जांपल चाइना में है। चाइना से माल अगर इंडिया में इंपोर्ट हो गया, दैट टाइम आल्सो जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। गेटिंग दिस? यानी एक ही ब्रांड के अंडर एक हेड ऑफिस से कुछ माल ब्रांच ऑफिस को आता है, that time GST will be also applicable. Getting this? If it may happen that your branch will be outside India or head office may be outside India, दोनों में से एक बाहर रहेगा, एक इंडिया में रहेगा, that time also GST is applicable. Then lottery, betting, gambling, इसके ऊपर भी GST applicable है। Lottery tickets are goods and GST will be payable. लॉटरी टिकट को जीएसटी ने गुड्स माना है, इसलिए जीएसटी पेमेंट करना कंपल्सरी है। नाउ once a person is registered under GST, then any activity carried out by him, एक बार उसका जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन हो गया है उसी आदमी का, तो उसके बाद उसने कुछ भी काम किया, यानी सेल किया, सर्विस प्रोवाइड की, जॉब वर्क किया, मैन्युफैक्चरिंग दिया, तो वुड फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। तो उसको क्या बोला जाएगा, सप्लाई बोला जाएगा, स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड अंडर द लॉ।
Okay, so these are the some of the points which we need to understand. Now next is, what is interstate supply? Very easy point, just go through this slide. इंटरस्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जो सप्लाई जाता है तो उसको बोलते हैं इंटरस्टेट. एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे स्टेट को जाएगा, दैट विल बी आल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टेट. एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी को जाएगा तभी भी इंटरस्टेट रहेगा. अगर हम लोग इंपोर्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड कंट्री, दैट टाइम आल्सो इट कम्स अंडर इंपोर्ट एंड इट विल बी आल्सो कॉल्ड एज ए इंटरस्टेट. ओके, उसके बाद एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, ये एक यूनिट से दूसरे स्टेट में अगर माल जाता है, एट दैट टाइम आल्सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टेट सप्लाई. देखिए इंटरस्टेट यानी क्या है. अंडर जीएसटी, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इट इज कॉल्ड एज इंटरस्टेट. वेरी सिंपल मीनिंग डेफिनेशन. सप्लाई व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ कस्टमर आर. सप्लायर का लोकेशन और प्लेस जहां पे माल भेजना है, वो दोनों लोकेशन क्या है, अलग अलग स्टेट्स में है. या तो अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में हो सकते हैं. एक स्टेट और दोनों में से एक स्टेट रहेगी, दूसरा यूनियन टेरिटरी रहेगी. नेक्स्ट, द सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड टू इंडिया. इंडिया में अगर गुड्स कोई भी इंपोर्ट किया तो उसको भी क्या बोलते हैं, इंटरस्टेट सप्लाई ही बोलते हैं. till they cross the custom station. Cross the custom stations are also called as a interstate supply. उसके बाद सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू और बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट ऑफ अदर स्टेट. एक एसईजेड से दूसरे एसईजेड में अगर माल जाता है, दैट विल बी अगेन कॉल्ड एज इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. व्हाटएवर इट, आप क्या भेज रहे हैं उसके हिसाब से उसको इंटरस्टेट माना जाएगा. भी देखिए, इंपोर्ट के बारे में हम लोगों ने देखा कि इंपोर्ट के बारे में टैक्स जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन दी ऑल दी इनपुट्स. जीएसटी इंटरस्टेट के लिए भी है और इंपोर्ट ड्यूटी के साथ जीएसटी भी भरना पड़ेगा. लेकिन एक्सपोर्ट के बारे में क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में दैट टाइम व्हाट इज देयर. सी, the export of goods or services is considered as a zero rated supply. Zero rated supply means what? Right now there is no need to pay the tax GST. तो GST जीरो रेट यानी जितने भी हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे वो सारे टैक्स फ्री रहेंगे, जीएसटी फ्री रहेंगे. लेकिन इंपोर्ट के ऊपर जीएसटी भरना है, लेकिन एक्सपोर्ट के ऊपर नहीं भरना है. Getting this? Now GST will not be levied on export of any kind of goods and services. कोई भी goods and services अगर हम लोग इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर हम लोगों को जीएसटी भरने की जरूरी नहीं है. Any registered person availing the option to supply goods and services for export without payment of integrated tax shall furnish prior to the export a bond or letter of undertaking. हम लोग क्या कर सकते हैं, विदाउट पेइंग IGST, विदाउट पेइंग एनी काइंड ऑफ GST, we should have to fill this bond. We have to sign this bond और इसको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बोलते हैं. एक बार आपके पास लेटर ऑफ अंडरटेकिंग रहेगा, at that time you have no need to pay the export duty or GST. Try to understand, because those who are the exporters, they have registered as a exporter. Try to understand. जो एक्सपोर्टर होते हैं, जिसका माल हमेशा बाहर जाने वाला है, उनका रजिस्ट्रेशन अलग होता है और उसको एक्सपोर्टर बोल के रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. And if they are registering as an exporter, at that time they have to fill the bond or letter of undertaking. तो उनको क्या करना पड़ेगा, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, तभी जाके वो जीरो रेटेड सप्लाई रहेगा, उसके ऊपर टैक्स भरने की जरूरत है. अभी देखिए, व्हाट इज मीन बाय लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और बॉन्ड क्या होता है. जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड, जस्ट रीड दिस स्लाइड. लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और बॉन्ड क्या होता है और वो किसको भरना पड़ता है, एक्सपोर्टर को, नॉट इंपोर्टर. जस्ट सी,
Yes, finished. Gone through this slide, yes or no? Have you read this slide? Just reply me. Did you understand? Did you understand this slide? Letter of bond or letter of undertaking क्या होता है? Just see. This is the bond or letter of undertaking is required to be furnished in the form number GST RFD 11. GST RFD 11 यानी RFD stands for refund. Refund का short form है RFD. So GST RFD फॉर्म नंबर 11 भरना चाहिए. किसने भरना चाहिए? एक्सपोर्टर ने भरना चाहिए. कहाँ पे भरना है? GST कॉमन पोर्टल पे वो फॉर्म भरना चाहिए. If he wants to export the goods and services, so before exporting the goods and services, he need to fill this form. तो ये फॉर्म क्या होता है? This form will be filled with the bank guarantee. वो फॉर्म के साथ हम लोग बैंक गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं. To the amount of IGST, binding himself कि उसके ऊपर उतना अमाउंट का IGST का बोझा रहेगा. To pay the tax due कि उतना अमाउंट ऑफ टैक्स he has to pay along with the interest specified within the period. तो कितना जो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट और अमाउंट ऑफ IGST वो सब कुछ हमको पे करना पड़ेगा. कब? 15 days after the expiry of 3 months from the date of issue of invoice for the exports if goods are not exported outside the India. इसका मतलब मैंने एक्सपोर्ट का इनवॉइस बनाया, मैंने एक्सपोर्ट का इनवॉइस बनाया, बट 3 महीने तक अलाउ है कि गुड्स विद इन 3 months यू हैव टू डिलीवर दिस गुड्स टू द अदर कंट्री. अगर वो गुड्स आज इनवॉइस बनाने के बाद 3 महीने तक अगर नहीं जाता है तो दैट टाइम आपने रजिस्ट्रेशन किया एज ए एक्सपोर्टर बट यू हैव नॉट सेंट द गुड्स विद इन 3 months, दैट टाइम यू हैव टू पे अमाउंट ऑफ IGST. अगर गुड्स नहीं गए 3 महीने में बाहर. तो ये कहाँ पे लिखा है हम लोगों ने? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या बॉन्ड लिख के हम लोगों ने सबमिट किया. बिकॉज माई एग्जिस्टेंस इज आई एम वर्किंग एज अ एक्सपोर्टर, तो मेरा बिजनेस एक्सपोर्ट करना ही होना चाहिए. अगर किसी हालत में गुड्स सेल आउट करने के बाद, इनवॉइस बनने के बाद 3 महीने में अगर गुड्स मेरे बाहर नहीं जाते इंडिया के, दैट टाइम आई नीड टू पे IGST. 3 महीने का टाइम पीरियड. और 15 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year, अगर आपको 1 महीने का अगर परमिशन है तो एक महीने सॉरी 1 साल का अगर आपके पास परमिशन है तो किसने दिया हुआ? कमिश्नर ने दिया हुआ. कमिश्नर ने अगर आपको आपने इफ यू हैव टेकन द परमिशन ऑफ कमिश्नर ऑफ 1 year बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन नेचर ऑफ योर गुड्स और सर्विसेज. तो वो 1 साल खत्म होने के बाद अगर 15 दिन में नहीं जाता है, ट्रांसफर नहीं होता है, एट दैट टाइम यू शुड हैव टू पे दिस 15 days after the expiry of 1 year or such further period as may be allowed by the commissioner. जो कुछ कमिश्नर ने अलाउ किया रहेगा पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द इनवॉइस ऑफ द एक्सपोर्ट. जब से इनवॉइस का जब जिस डेट को मैंने इनवॉइस बनाया उसके आगे 1 साल और 1 साल होने के बाद आफ्टर 15 days में अगर पेमेंट ऑफ सर्विस सच सर्विसेज इज नॉट रिसीव, मैंने एक्सपोर्ट किया और अगर 1 साल तक उसका पेमेंट मुझे कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में नहीं आता है, कन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी में अगर मेरा इनवॉइस का पेमेंट मुझे नहीं आता है, एट दैट टाइम आई हैव टू पे IGST. अगर 1 साल के अंदर मेरा माल जाएगा 15 दिन में और 15 दिन में मैंने क्या किया? माल एक्सपोर्ट किया और उसका पेमेंट 1 साल के अंदर आना चाहिए. अगर नहीं आता है तो दिस विल बी लायबल फॉर IGST. और ये सब
जिसमें हमने लिख के दिया है, जिसका बॉन्ड बना के हम लोगों ने अपलोड किया है जीएसटी पोर्टल को, तो उसको बोलते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अंडरस्टूड दिस? यस और नो? Yes, Yes, students. sir. Are you are you get are you getting? Now next is the what is the export of services under GST? हम लोगों ने गुड्स का देखा, अभी सर्विसेज का देखते हैं। As per IGST Act 26, export of services means the supply of any service. When export करेंगे उसमें क्या है, export कब होता है? When supplier of service is located in India, supplier India में है और recipient outside India में, at that time we will call it as supply of service. I will be providing service to the person who is in China, who is in Germany, who is in Japan, and as a supplier I belongs to India. ठीक है, तो recipient will be in outside country and supplier will be within India. The place of supply, जहां पे मेरे goods जाएंगे, this would be there in the outside India. तो goods मेरे कौन इंडिया छोड़ के बाहर जाने चाहिए, that time we will call it as export. Then payment of such service has been received by the supplier of service in the convertible foreign exchange. फॉरेन करेंसी में उसके मुझे पैसे मिलना चाहिए, तभी उसको हम लोग एक्सपोर्ट बोलेंगे। अगर प्लेस भी इंडिया छोड़ के होना चाहिए, रिसिपेंट इंडिया का नहीं होना चाहिए और सप्लायर इंडिया का होना चाहिए, सारी कंडीशन जहां पे फुलफिल होते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर जीएसटी। ओके, नाउ हाउ आर एक्सपोर्ट्स ट्रीटेड अंडर जीएसटी लॉ? जीएसटी के अंडर एक्सपोर्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है? तो जीएसटी एक्सपोर्ट्स आर नथिंग बट इट इज इंटरस्टेट सप्लाई which is covered under, and ये interstate supply, though we are sending goods outside India, but you will consider it as an interstate supply. GST will consider this kind of export or this kind of import as an interstate supply, and this is included under the IGST Act 2017. तो उसका सारा explanation IGST Act 2017 में दिया। Though we are exporting the goods and services outside country, but we, for the sake of our understanding, for the sake of our calculation, we will consider it as an interstate supply, and IGST Act 2017 will be applicable. Now the export is treated as an interstate supply under GST, and IGST is charged on the export. तो interstate supply कंसिडर होने से उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी लगेगा ऑन एक्सपोर्ट्स। ओके, नाउ बट whatever are the exports are there now, right now these are the zero rated. अभी जीरो रेटेड क्या बोलते हैं? द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्टेड शैल बी रिलीव्ड फ्रॉम द जीएसटी, उसके ऊपर टैक्स पेमेंट करने का जरूरी नहीं है, 0% आईजीएसटी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। Relieved from the GST upon them either at the input stage or at the final stage of product. कौन सा भी प्रोडक्ट इनपुट स्टेज में रहेगा या फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्ट रहेगा, तो ये सारे एक्सपोर्ट क्या है? जीरो रेटेड है और उसके ऊपर जीरो आईजीएसटी पेमेंट करना है। तो जीएसटी विल नॉट बी लेविड इन एनी काइंड ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज अगर इंडिया से एक्सपोर्ट होती है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। Getting this? So that is something about zero rated supply. This is the supply on which you have to rate of tax will be zero. उसको बोलते हैं zero rated supply. So this is the treatment of export under GST law. अभी देखिए जीरो रेटेड सप्लाई कैसे होता है, तो उसमें क्या कंडीशंस क्या है जीरो रेटेड सप्लाई? Now zero rated supply is defined under section 16(1) of IGST Act. तो किसमें दिया है ये? IGST Act 2017 में जीरो रेटेड सप्लाई का डेफिनेशन दिया है।
अभी ये जीरो रेटेड सप्लाई यानी है क्या, देखिए जस्ट गो थ्रू दिस, इट इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जस्ट just try to understand. Yes, finished. Now Yes, sir. see, GST zero rated supply किसको बोलते हैं? It means any of the following supplies of goods and services, both or namely. One is the export of goods and services, export of goods or services or both will be zero rated. Then supply of goods and services or both to a special economic zone developer और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट को अगर मेरा माल जाता है तो एट दैट टाइम सप्लाई विल बी जीरो रेटेड. सप्लाई विल बी जीरो रेटेड यानी इसका मतलब ये है जो रेसिपेंट रहेगा, जो मेरा रेसिपेंट रहेगा उसको टैक्स पे करने की जरूरी नहीं. Getting this? So this recipient will pay zero tax on this special the goods and services which are given to the special economic zone. Then zero rated supply does not mean that goods and services have tariff rate of 0%. 0% tariff rate 0% नहीं है. Tariff rate will be same, but the liability of recipient becomes zero. उसके टेरिफ रेट जो भी आईजीएसटी जीएसटी एक्ट में मेंशन किया हुआ उतना ही रहेगा, लेकिन जो रेसिपेंट रहेगा ऑफ सर्विसेज, रेसिपेंट ऑफ सर्विस और गुड्स, ही शुड पे जीरो टैक्स टू द सप्लायर. सप्लायर को कितना टैक्स देगा? 0% टैक्स देगा. एक्चुअल गुड्स की टैक्सेशन, गुड्स का रेट 5%, 12% और 18 और 28% रहेगा. बट बीइंग a recipient of special economic zone, I don't have need to pay GST to the supplier. सप्लायर को देने की रेट, सप्लायर को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो इसको बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई. एक्सपोर्ट के दौरान, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के दौरान और जीरो रेटेड सप्लाई में क्या होता है कि सप्लायर इज नॉट गोइंग टू आस्क टू कलेक्ट द जीएसटी फ्रॉम रेसिपेंट. तो सप्लायर रेसिपेंट से कुछ भी टैक्स नहीं ले सकता है. So this is a provision under IGST Act 2017. अभी देखिए, the claim of input tax credit on zero rated exports. तो इसका आईटीसी कैसे लेते हैं? आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट जीरो रेटेड एक्सपोर्ट का कैसे लेते हैं? एक्सपोर्ट होता है यानी गुड्स आर गोइंग आउटसाइड, गुड्स आर गोइंग आउटसाइड. एट दैट टाइम उसका आईटीसी कैसे दिखाता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे हम लोग देते हैं. Now, an exporter can claim a refund for zero rated supplies as follows. तो उसको एक्सपोर्टर क्या करेगा? रिफंड के लेगा. उसको एक्सपोर्टर रिफंड लेगा, जीरो रेटेड सप्लाई के ऊपर रिफंड लेगा. उसके पास दो ऑप्शन, एक तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग. जो एक्सपोर्टर रहता है उसने क्या किया है? माल सेंड करने के पहले, गुड्स सेंड करने के पहले उसने जीएसटी पोर्टल में बॉन्ड अपलोड किया है और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अपलोड किया है. गेटिंग दिस? तो कंडीशन क्या है कि
एक बार इनवॉइस बन गया एक्सपोर्ट का तो 3 महीने के अंदर माल बाहर जाना चाहिए। गेटिंग दिस? और एक बार माल बाहर जाने के बाद 3 महीने इज द 3 months आर दी लिमिट। और उसका पैसे में कन्वर्शन, फॉरेन करेंसी कन्वर्शन 1 साल और 15 दिन के अंदर मिलना चाहिए। ये बॉन्ड में, ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में मैंने जीएसटी पोर्टल को अपलोड किया है। प्रोवाइडेड दैट ड्यू टू हैविंग दिस सिक्योरिटी विद बैंक्स कंसेंट, you will get the input credit of zero rated supply. Now, first option is supply of goods and services under bond or letter of undertaking is subject to the condition, safeguard and procedures as may be prescribed. जिसका जो कुछ प्रोसेस है, we are going to follow this process without payment of integrated tax. वहां पे integrated tax payment करने की जरूरी नहीं है, because whatever is the process of exports which is given into IGST, that we have to follow. Okay, and then claim for the refund under unutilized input tax credit. Unutilized जितना भी टैक्स क्रेडिट मुझे नहीं मिला है, ड्यू बिकॉज देखिए एक्सपोर्ट के दौरान क्या होता है, देखिए आई विल नॉट रिकवर। एक्सपोर्ट के दौरान में जीएसटी क्या होता है, सप्लायर विल रिकवर दिस जीएसटी फ्रॉम द कंज्यूमर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सप्लायर क्या करता है, जितना भी वैल्यू एडिशन होगा वो कंज्यूमर से लेता है। लेकिन जीरो रेटेड में क्या बोला है, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या बोला है हम लोगों ने, जो रेसिपेंट रहेगा वो तो आपको कुछ भी पैसा टैक्स देगा नहीं, लेकिन आपने तो भरा है ना, आपने प्रीवियस स्टेज का अर्लियर स्टेज, एज अर्लियर स्टेज आपने तो गवर्नमेंट को भरा है। गेटिंग दिस? तो उसका क्रेडिट आपको कैसे मिलेगा? दैट्स व्हाई यू हैव टू आस्क, यू हैव टू क्लेम फॉर द रिफंड। जितना भी आपने अर्लियर स्टेज से अभी तक इसी स्टेज तक जितना भी आपने टैक्स पेमेंट किया रहेगा, this tax payment you are not going to recover through your recipient, because you are exporting the goods and services, or you are providing these goods and services to special economic zone. हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन रहेगा या एक्सपोर्ट हम लोग माल करते हैं, एट दैट टाइम जो माल जिस कंट्री में जाएगा, जिस एरिया में जाएगा, वो कंज्यूमर से, वो कस्टमर से हम लोग कोई भी जीएसटी नहीं लेंगे, रिकवरी नहीं करेंगे जीएसटी का, बिकॉज जीएसटी इज द इनडायरेक्ट टैक्स। हम लोग बर्डन एंड यूजर तक ट्रांसफर करके जाते हैं। अगर मैं नहीं लूंगा तो इसका मतलब मेरा पैसा गया हुआ वो कैसे मुझे वापस मिलेगा? दैट्स व्हाई यू हैव टू अप्लाई फॉर रिफंड बाय यूटिलाइजिंग, बाय क्लेमिंग फॉर द रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। जितना भी अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका रहेगा उसका आप रिफंड मिलेगा ऑन जीरो रेटेड एक्सपोर्ट। Second, the exporter needs to file an application for refund on the common portal. तो इसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्टर को रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है, any exporter or United Nations or delegations as a specified in section 55 after fulfilling certain conditions, यानी सेफगार्ड एंड प्रोसीजर का अगर हम लोगों ने कंडीशन फॉलो किया, prescribed and paying IGST can claim for the refund of certain taxes. अगर यूनियन टेरिटरी को जाता है, यूनाइटेड नेशन को माल जाता है, यूनाइटेड नेशन को हम लोग अगर सेंड करते हैं माल, एट दैट टाइम IGST जितना भी आपने भरा रहेगा वो हम लोग रिफंड के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। So this is the tax treatment on input tax credit on zero rated export. Getting this? Is it clear to you? Yes, students. Yes, sir. ओके, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, जीरो रेटेड में आपको क्या ध्यान में है, जीरो रेटेड यानी जो रेसिपेंट आपका रहेगा वो टैक्स भरेगा नहीं, लेकिन तब तक सारे स्टेज में रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक सब लोगों ने टैक्स भरा है, लेकिन हर मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर से रिकवर किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर से रिकवर किया, होलसेलर ने रिटेलर से रिकवर किया, और रिटेलर को कंज्यूमर से रिकवर करने के लिए चांस नहीं है। तो रिटेलर ने का क्या हुआ, रिटेलर का इनपुट टैक्स क्रेडिट बंद हो गया ना,
तो वो कैसे रिकवर करेगा, उसके लिए उसको रिफंड के लिए एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। दिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस। ओके, now next one is like the applicant has to apply for the refund as per the conditions specified under section 54 of CGST Act. उसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। The exporter is required to file the shipping bills. ऐसा नहीं मिलेगा उसको, तो जो शिपिंग जो बिल रहेगा शिपिंग का एट द टाइम ऑफ यानी ट्रांसपोर्टेशन बिल थ्रू दी, अगर हम लोग वाया शिप से अगर हम लोग माल बेचते हैं तो उसका शिपिंग बिल यानी अपलोड करना चाहिए, फाइल करना चाहिए। Then electronic as well as manual shipping bill formats are amended by the departments of GST Act. तो उसका इलेक्ट्रॉनिक शिपिंग बिल एंड मैनुअल शिपिंग बिल्स आर देयर, उसके फॉर्मेट बनाए हैं that you should have to take. You should that exporter that shipping the shipping agency should have to file this bill. Then it would be deemed to have been filed only when person in charge of shipment file the export manifest or report mentioning the number and date of shipping bill. ये सब कुछ क्या किया है, मेंशन किया रहेगा, कब से शिपिंग स्टार्ट हुआ, कब डिलीवरी होगा, कितने क्वांटिटी है, तो ये सब कुछ स्पेसिफिकेशन पर्टिकुलर्स उसमें मेंशन होना चाहिए, तभी उसको रिफंड मिलेगा। अगर ये डेटा एक्सपोर्टर ने सबमिट नहीं किया रिफंड के दौरान तो आपको नहीं मिलेगा, उसका रिफंड नहीं मिलेगा। तो मॉडिफाइड फॉर्म्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल डिपार्टमेंट वेबसाइट के ऊपर इसके शिपिंग बिल के फॉर्म्स अवेलेबल। सो दिस during this conditions you will get refund. Now which are the zero rated supply? कौन से ऐसे सप्लाई है उसके ऊपर टैक्स रेसिपिएंट को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड, दिस ऑल आर द जीरो रेटेड supply of goods or supply of services. So see which are the goods which comes under, which are the goods which comes under, or which are the services which comes under zero rated supply. Just go through this slide. Yes, finished. Understood what are the zero rated? All exports are zero rated. Then supply made to the special economic zone, this will be again zero rated, except these exports goods and supply to the special economic zone. We have another list of goods and services which are zero rated. All agricultural products are zero rated. Then essential foodstuffs, that oil, salt, flours are also zero rated. Livestock, poultry, meat, eggs, fish, water for domestic users. So all are the architecture services in connection with the land outside Malaysia. Malaysia छोड़ के दूसरे कंट्री में अगर हम लोग आर्किटेक्चर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ जीरो रेटेड। जीरो रेटेड में होता है क्या, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी लेकिन आपको टैक्स जीरो रहेगा।
आपको टैक्स, so rate of tax is not going to change, but your liability becomes zero. Rate of tax will not change, but whatever is the specified as per the GST Act, जो GST Act में दिया हुआ रेट वो as it is रहेगा. Getting this? But आपकी liability as a recipient of the services, आपकी liability zero रहेगी. So this is the list of zero rated supply. Okay. Now, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं रिफंड एक्सपोर्ट के बारे में? एक्सपोर्ट के रिफंड लेने के लिए हमको कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं? सी, कॉपी ऑफ रिटर्न्स एविडेंसिंग पेमेंट ऑफ ड्यूटी, रिटर्न एविडेंसिंग पेमेंट ऑफ ड्यूटी, यानी कुछ पेमेंट आपने किया रहेगा, शिपिंग का पेमेंट किया रहेगा, कुछ एडिशनल चार्जेस रहेगा, फीस रहेगी, या कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रहेगा, डिलीवरी चार्जेस रहेगा, उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए. देन कॉपी ऑफ इनवॉइस, जो आपने बिल बनाया रहेगा एक्सपोर्ट का, वो भी आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा. द डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग दैट द बर्डन ऑफ टैक्स पेइंग हैज नॉट बीन पास्ड ऑन, यानी सेल्फ सर्टिफिकेशन, आपको सीए सर्टिफिकेशन भी आपको देना है. किसका, कौन सा सीए सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट है? प्रूविंग दैट, द डॉक्यूमेंट प्रूविंग दैट burden of paying tax has not been passed. तो burden of tax मैंने किसी के और के ऊपर पास ऑन नहीं किया है, इसका सर्टिफिकेशन भी मुझे देना पड़ेगा. Means what? I am not charging the tax. I am not transferring recovery of this tax from somebody else. And any other document required by the government. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को रिफंड का क्लेम लेते समय सबमिट करना पड़ेगा. ओके. सो अभी हम लोग इधर बस करते हैं जीरो रेटेड सप्लाई का, एक्सपोर्टर का, वो बाद में देखते हैं. आई थिंक आई हैव फिनिश्ड आवर टाइम, सो लेट अस स्टॉप हियर. सो दैट्स इट फॉर टुडे. डिड यू अंडरस्टैंड Yes, sir. did you understand whatever I taught this session? It is one of the important chapter, supply. So hope you are understanding. So let us stop here. Tomorrow we have a session at the same time, 8 p.m. in the evening. So see you tomorrow. Thank you so much. Thanks, sir.